आज हम प्रेजेंटेशन के बारे में 3-4 चीज की बात करेंगे. We'll first talk about my history, we'll talk about the brand's history, we'll talk about what the concept is, we'll talk about क्या profit margins है, कितना setup का cost लगता है, and then we'll take ahead the Q&A round. So first I'll talk about myself. I have been in the hospitality industry from the last 15 years. I've handled clubs, restaurants, and this is my first foray into the retail industry. So this brand, now I'll talk about the brand. So this brand we started about 6 years back. It was the first bubble tea brand in India. It was the first bubble tea localized brand in India which has gone to such high levels. Localized मतलब इसके अंदर हम raw materials से लेके machinery से लेके सब कुछ इंडिया के अंदर ही बनाते हैं. There are some raw materials we still import, but we are about 90% localized. तो इसमें हमारा फायदा क्या है? हमारा profit margin is very high. A lot of other players try to get bubble tea into the market. Bubble tea right now, आप देखेंगे तो it is a concept which is right now the most trending concept all over the world. हर country के अंदर bubble tea right now is the most trending concept. So what people do is वहां से products लेके आते हैं, machinery लेके आते हैं, and इधर बेचने को try करते हैं. But because वो setup cost and ingredient cost इतना expensive हो जाता है, it does not become a surviving concept. Most of the brands who have tried to do it have failed miserably. Now, only we have been surviving from the last 6 years, and so many of our franchises are still open only because our profit margins are high, our concepts are localized, and even our taste is localized. हमने authentic flavors भी रखे हैं, but हमने extremely localized flavors भी रखे हैं जो local public को ज़्यादा suit हो. So now, yeah, we'll talk about the concept. जो हमारा brand है उसके बारे में बात करेंगे. तो concept के बारे में बात करते हैं. Bubble tea. Bubble tea क्या concept है? बबल टी जस्ट these टैपियोका पर्ल्स जो टी ब्लैक टी या मिल्क टी में डाला जाता है, एंड बेसिकली आइस टी रहती है, आइस मिल्क टी या आइस ब्लैक टी. ये एक बेसिकली एक साउथ ईस्ट एशियन कॉन्सेप्ट था जो उधर की लाइफ बहुत बिजी रहती है, पीपल डोंट हैव टाइम टू ईट, तो नॉर्मली दे जस्ट पिक अप अ बबल टी जिसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स तीनों एक साथ में आ जाता है. इट बिकम द कंप्लीट मील. एक बबल टी पी लिए आपका पूरा मील हो जाता है. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज लास्ट देयर फ्रॉम लास्ट 30-40 इयर्स इन साउथ ईस्ट एशिया, बट ये वेस्टर्न कंट्रीज में लास्ट 10 इयर्स में पिकअप हुआ है बिकॉज इसके अंदर वेरिएशन भी आने लगे हैं, जैसे टारो शेक्स आने लगे हैं, हांगकांग की शेक्स आने लगे हैं, एंड हमने इंडियनाइज के अंदर स्ट्रॉबेरी, मैंगो सब फ्लेवर्स उसके अंदर लेके आ गए. इवन द टैपियोका पर्ल, जो टैपियोका पर्ल इज एग्जैक्टली लाइक साबूदाना, बट साउथ ईस्ट एशियन में ब्लैक साबूदाना रहता है विच दे कॉल टैपियोका. हमारे इंडिया में व्हाइट रहता है. तो वी गेट दिस. ये टैपियोका अभी भी हम इम्पोर्ट करते हैं बिकॉज इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होता है. बट उसके अलावा वी स्टार्टेड गेटिंग पॉपिंग बबल्स, जेली, चॉकलेट चिप्स जो वही स्ट्रॉ के अंदर वैसे ही आते, गिव दैट सेम फीलिंग, बट इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट. तो ये जो साबूदाना रहता है या जो टैपियोका रहता है, इट इज अ वेरी व्हाट यू से ब्लैंड काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. So because it is bland, it is a very taste specific product. Some people really love it. Some people, इसको किसी को समझ में नहीं आता है. That is why we forayed a lot into other products like waffles, pancakes, nachos, bubble waffles, pizzas. So we have like a complete cafe, but all our products are completely different. ये मैं अभी आपको next slides में थोड़ा बताऊंगा. Now about us. So we initially started off about 6 years back with one single outlet in Mumbai, and very fast we made it to 3 outlets. We wanted to understand कि ये तीनों आउटलेट का सेल का डिमांड क्या है, सेल का प्रोसीजर क्या है, तो in terms we understood the industry and we saw that there is demand. Then we started localizing it. We always wanted to franchise this brand. This brand was a very franchisable concept because ingredients से लेके जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है, इट्स जस्ट अ 3-step प्रोसीजर. इट कैन बी रेप्लिकेटेड बाय एनीवन. मतलब फॉर एग्जांपल ये ऑफिस प्यून को हम ये पूरा एक दिन के अंदर पूरा मेन्यू ट्रेन कर सकते हैं करने के लिए. तो देयर इज नो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू मेक एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स. So that is why we always thought it is a very franchisable concept. Then we started localizing everything. We started localizing the bubbles. We started localizing the jellies. Right now we have 20 flavors in bubbles, 20 flavors in jellies. जो नॉर्मली एक सिंगल फ्लेवर ऑफ टैपियोका होता था, वो उसके अंदर हम 20 फ्लेवर अलग अलग है चीजों की. Now this is a very big question. Why Dr. Bubbles? There are so many other brands right now in the market जो आप फ्रेंचाइज कर सकते हो. People first तो why एक आप पहले डिसीजन बना लीजिए. You want to enter into the hospitality industry. Hospitality industry में आप एंटर करेंगे. Why do you enter? Because सबको वही लगता है कि it is a very growing concept, but ये जितना बड़ा concept बाहर से दिखता है उससे डबल complicated पीछे होता है. So the best way to enter is by franchising. And
the second point you understand ki, do you take a full restaurant and franchise it, or do you start with a small concept to understand, what are the nitty-gritties of the thing. So you always start with a smaller concept. That's why Dr. Bubble. अभी small concept में भी आइसक्रीम concept है, milkshake concept है, cafe concept है, and then it is we. So now cafe 50 brand है, आइसक्रीम में 50 brand है, but Dr. Bubbles जो bubble tea concept है, उसमें we are the only single people. Now what do you want to do? You want to do something which is everyone is doing. उसका भी positives है, उसका भी negatives है, and or else you want to get something very unique into the market. In that concept, in that thing, we properly strike, because we have all the products we have are completely unique, and we go on innovating with our products. So we coming up with new products every 6 months. ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मिल्कशेक लॉन्च किया या वॉफल लॉन्च किया, उसी के ऊपर हम 5 से 6 साल निकाल रहे हैं. हम एवरी 6 मंथ्स एक नवा प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं. Another thing, because we are completely localized and completely 3-step procedure हमारा ये है, तो इसमें wastage is zero. So the profit margin was very high. Right now in the food market, to get anything above 50% is a very good profit margin, and we are working at 70 to 80% profit margin. Another thing, जैसे हमने बताया, we've localized everything. So we have bubble tea से लेके milkshake से लेके लस्सी से लेके, then waffles के अंदर we have 3-4 different types of waffles, like pancakes, bubble waffles, regular waffles. We have pizzas, we have regular chai, we have regular coffee. So we have everything for everyone. So ऐसा नहीं है कि हम खाली बच्चों को टारगेट कर रहे हैं. Yes, हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस है is going to be the teenagers, but उनके साथ में उनके पेरेंट्स या elders आएंगे, तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ है. Another thing, you look at a brand who already has a good presence in India. So we have opened about 45 to 50 outlets all over India. And another thing, you want a brand which is recognized. So we have got about 4 awards in the last 2 years. Another thing, what you want is, a brand who has a success formula. What is the success formula we have in need and speed? Now, हम इस पे खरे कैसे उतरते हैं? Because we have our own manufacturing. तो इसमें हम कुछ भी नीड जो कस्टमर की होती है, हम वो फास्टेस्ट स्पीड में उसको वो चीज को हमारे रॉ मटेरियल को कस्टमाइज करके प्रोडक्ट के सामने रखते हैं. Another thing, a lot of people are against FOFO model. FOFO model मतलब franchise owned, franchise operated. Yeah, a lot of people want franchise owned, company operated, because company, किसी को फ्रेंचाइज चलाने का झिकझिक नहीं चाहिए रहता. ना इसमें हमने झिकझिक पूरी निकाल ली है इसके अंदर, बिकॉज आपको एक्सपर्टीज की कोई जरूरत नहीं है. हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो सब मशीन्स के थ्रू बनती है. एवरीथिंग कम्स एज प्री मिक्सेस. आपको खाली मशीन में डालना है और निकालना है. तो इसमें आपका जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट बिकम्स जीरो. मतलब लिटरली 2 बंदे के अंदर पूरी आपकी आउटलेट चल सकती है, एंड वो 2 बंदे कोई भी हो सकते हैं. They don't have to be supplied by us. You can get regular people, and we will train them in one single day to do the whole menu. तो इसमें आपका फायदा क्या आ जाता है? You can have full control of the outlet, full control over the money, full control over the accounts, and that is what I feel is a positive for every person, every Indian, to have full control over their money rather than give their money to someone else to run it. Because I've always felt, you give your money to someone else, and कभी भी कोई किसी को कमा के देता नहीं है. So you have to earn your own money. So I feel the more control you have is better, and we will give you full backend support to, to push you with that control. Nothing staff required. A lot of people ask us कि हमने outlet ले लिया, staff कौन देगा? Staff we can easily supply all over India, because as we told, we do not need skilled labor. We can take any person and train them anywhere. So if you have your own staff, we will train them, or else we can supply staff all over India. We do not have any problem supplying staff all over India. Another thing, how big of an outlet we need. So everyone asks us, why do you need just 150 to 250 square feet का area? So we require a single outlet. जो single गाले की दुकान रहती है, उतना हमको requirement रहता है. First, it is a small investment, because आप जितनी जल्दी पैसा डालेंगे, जितना कम पैसा डालेंगे, उतनी जल्दी आपका पैसा निकलेगा. That is what we feel. So आप for example आपने 600 स्क्वायर फीट का आउटलेट डाल दिया, तो आपको आउटलेट बनाने में 10 से 12 लाख रुपए घुस जाएंगे. इंटीरियर, एसी, देन वो आउटलेट को सर्विस करने के लिए आपको ज्यादा लोग लगेंगे. वो आउटलेट को सर्विस करने के लिए आपको ज्यादा जो इक्विपमेंट रहता है वो लगेगा. आपका एवरीथिंग विल इंक्रीज. तो हियर वी गिव एवरीथिंग इन डिस्पोजेबल, सो इट बिकम्स अ वेरी इजी टू ऑपरेट काइंड ऑफ अ फंक्शन. अनदर थिंग, बिकॉज इट इज अ स्मॉल आउटलेट, 1 से 2 लोग के अंदर पूरा आउटलेट आपका चल सकता है. तो यू रिक्वायर लेस ऑफ मैन पावर. तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है, इट बिकम्स वेरी 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 लो. We are not telling कि आप 10 से 12 लोग रखो या 6 से 7 लोग रखो जिसके अंदर. एंड टुडे टू गेट गुड स्टाफ, यू आल्सो नो 15 to 16,000 तो स्टार्ट पे होती है टू गेट गुड स्मार्ट पीपल. आप कोई भी जगह पे इंडिया में देख लीजिए,
एनी पर्सन हु स्लाइटली इंग्लिश स्पीकिंग स्मार्ट पर्सन 15 से 16,000 तो लगता ही है। तो आप जितने लोग बढ़ाते जाएंगे उतना आपका सैलरी बढ़ते जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ते जाएगा। तो when it's a smaller outlet, 2 people is more than enough to handle the whole outlet. We have outlets that are run by one single person also, but the sales थोड़ा कम होता है। Now creating an ambulance, जितनी छोटी जगह रहती है उतना ही कम उस पर खर्चा रहता है to make the place. Yeah, Hinesh, I will take questions after my presentation. वो link छूट जाता है, तो guys please write down your questions. I will be more than happy to answer any and every of your question after the presentation is done. Nothing. Staff control again, 2 लोग को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप 10 लोगों को हैंडल करना उतना ही डिफिकल्ट रहता है। स्टॉक्स, तो जैसे मैंने आपको बोला, एवरीथिंग वी हैव इज प्रीमिक्स बेस्ड एंड कोई भी चीज पेरिशेबल नहीं है। एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 6 months to 18 months। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो 2 दिन में खराब होने वाला है, 4 दिन में खराब होना है। वी गिव एवरीथिंग पाउडर बेस्ड, पैकेजिंग बेस्ड। तो इंडिया में किधर भी हो आपका टेस्ट भी सेम रहेगा, आपका वेस्टेज 0 रहेगा एंड आपका ईज ऑफ मेकिंग विल बी द सेम। तो स्टॉक कंट्रोल विल बी एज इजी एज पॉसिबल। इसमें आज कुछ भी ऐसा मतलब खराब होने का एक ही तरीका है, या गिर के टूट गया या फट गया, दैट इज द ओनली वे। एंड वो एक टाइम होता है, दूसरी टाइम यू विल ओनली लर्न कि यार इधर रखने से गिर जाता है, यू विल नॉट डू इट अगेन। नथिंग। छोटी जगह का ऑटोमेटिकली रेंट कम रहता है। वी नॉर्मली डोंट टारगेट टू कीप अ रेंट लेस, वी टारगेट टू कीप अ गुड लोकेशन। तो वी नॉर्मली डोंट choose a location according to the rent, we choose a location according to the the walk-ins and कैसे उधर उसका एक्सपोजर कैसा है, वो हिसाब से हम लोकेशन चूज करते हैं। एंड ये एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी a faster return on investment. Now I'll talk about, a lot of people ask कि आप हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में हो जाएगा। Now I'll talk about my best and the worst. I have my best outlet which has done return on investment just in 3 months. Now our total investment cost is about 15 to 16 lakh rupees. इसका भी मैं ब्रेकअप दूंगा, कैसे इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होएगा उसका भी। इफ यू वांट आई विल टच इट राइट नाउ ओनली। तो 15 to 16 lakh rupees is my the fixed investment which is required. Now this is what we are catching at the higher end, we are not talking at the lower end. इससे कम भी हो सकता है, it all depends on the outlet. So we have outlets doing about 12-13 lakh rupees a month. Now when we take 70 to 80% profit margin, आप net profit भी पकड़ेंगे तो 50% net profit रहता है। There also they are earning 7 lakh rupees a month. तो 7 lakh rupees a month आप 3 महीने में 21 lakh rupees निकाल लेते हो। And my worst outlets have done it in about 18 months. तो 18 months और 3 months का मेरा worst and best का ये है। Now you will say इतना variance, it again all depends on the location, all depends on the city, all depend on the push and the marketing done by the franchisee. इसके अंदर marketing, social media and everything we do, but या local area जो आपने friends को बोलना है, local area को publicity करनी है, वो तो franchisee को ही करना पड़ता है, because we are Mumbai based. हम मुंबई के अंदर local area कर सकते हैं, but आपकी city में आके locally हमारे लिए करना थोड़ा difficult होता है। Again, just hitting the same points again, it's a unique and innovative bubble tea brand. Now the first thing, all our outlets are very exactly designed, same outlets बनते हैं। तो जो बॉम्बे में डॉक्टर बबल्स रहेगा वही नासिक में रहेगा, वही दिल्ली में रहेगा, वही चेन्नई में, सबके लुक बेसिकली सेम ही रहते हैं एंड बेसिकली दे आर मोस्ट ऑल लैब थीम बेस्ड। मैं लास्ट में जब भी आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, we made it very lab theme because it's more like an experiment. आप अपने ड्रिंक चूज करिए, आप अपना टॉपिंग चूज करिए, तो इट्स मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंट, आप क्या ट्राई कर रहे हो। तो वी गिवन इट दैट काइंड ऑफ अ लुक आल्सो। अगेन हम खाली ड्रिंक्स नहीं बेचते, हम वॉफल्स भी बेचते हैं, हम पिज़्ज़ास भी बेचते हैं, हम सेवरी चीजें भी बेचते हैं। तो वी लॉट ऑफ इनन्यूमरस कॉम्बिनेशंस यू कैन ट्राई। Like I told, most of the ingredients we have localized, but जो ingredients make bubble tea, जो tapioca रहता है, वो हम अभी भी import करते हैं। Again, we have about 20 flavors of milk teas, fruit teas, milkshakes, lassis, हर चीज के 20 flavor। तो we don't have less of choice. Like आप बहुत ब्रांड में जाएंगे, 4 ही चीज होगी, 5 ही चीज होगी। Because this is our main selling item, we want to keep the most flavors possible. Because इंडिया का जो टेस्ट पैलेट है इंडियंस का, बहुत ही वेरिएंस है। बिकॉज जैसे आप सिटीज देखेंगे तो सिटीज में इन्फ्लक्स सभी जगहों से होता है। तो किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, किसी को हेल्दी पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को वीगन पसंद है। तो वी केप्ट इन माइंड फॉर एवरीवन एंड वी मेड ड्रिंक्स फॉर एवरीवन। अगेन आवर ब्रांड इज प्योर वेजिटेरियन, वी हैव ड्रिंक्स व्हिच आर वीगन आल्सो, लाइक मिल्कशेक जिसमें कोई दूध नहीं होता है। तो वी हैव मिल्कशेक विच टेस्ट एग्जैक्टली लाइक मिल्कशेक बट हैज 0 मिल्क इन इट,
but that is some of the drinks, not all of them. Again, all of it is freshly brewed and handmade to order in our machine. So किसको कम मीठा चाहिए, कम थिक चाहिए, ज्यादा थिक चाहिए, everything can be done. Again, we use creamers जो है, we use non-dairy creamers. India के अंदर is a very new concept. Everyone wants मलाई वाला दूध, मलाई वाला cream. It does not really matter. आज के समय McDonald's हो, Burger King हो, everyone uses non-dairy creamers because first of all the cost कम होती है, second calories कम होती है, it's very healthy to drink. So fourth is it's easily replicable, easy to store. जो आप मैं पाउडर बेस्ड आपको चीजें भेजूंगा, वो आप किधर भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ. आपको लोकल दूध नहीं यूज करना है, आपको जो हम भेज रहे हैं वो यूज करना है. तो जो टेस्ट एग्जैक्टली जो बॉम्बे में मिल रहा है, आपको कंप्लीटली पूरे इंडिया में आपको सेम ही टेस्ट मिलेगा. Yeah, so these are some of the awards we have, some of the franchisees we have. This slide I will put in the last after my presentation. Even I take care personally of all our franchisees directly. So my personal number is there on the lower of this slide. So you can please note it down. It's 9967663030. And you all can connect to me directly whenever you want, on WhatsApp, on call directly. Questions hai, abhi we're going to do a question and answer. After this, we will be sending you an email with a full financial model, this presentation, and a financial brochure, not a financial, sorry, investor brochure, जिसके अंदर 99% everything हर detail लिखी हुई है. As an investor, what do you put in, what do you get, what are the products, everything to show it to someone, to show it to a bank. आपको लोन चाहिए, हर चीज के लिए वो email should be more than enough. उसके बाद also you have more questions, so my number is there. So please make sure that you put your email ID, जिसके अंदर I send, after this mail I will send you the whole details of investing into the company. Move on to the next slide. Yeah, this is a very big question which everyone asks me कि हमने फ्रेंचाइजी ले लिया, अभी ब्रांड क्या सपोर्ट करेगा. पहले तो मैंने आपको प्रोडक्ट का बता दिया. प्रोडक्ट इज ऑल प्रीमिक्स बेस्ड, ऑल मशीन बेस्ड. तो इसमें आपको बनाना बहुत ही इजी है. स्टाफ भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी हम सपोर्ट करेंगे. तो वी स्टार्ट विद द डिजाइनिंग. जो कॉन्सेप्ट हम चालू करते हैं, तो सबसे पहले इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, फेसबुक डिजाइनिंग करते हैं, इंस्टाग्राम का पेज डिजाइनिंग करते हैं, उसका जो कोलैटरल मटेरियल है वो हम बनाते हैं. So we have an in-house team, graphic designing team, we have an in-house interior designing team, and we have an in-house website designing team. ये हमारे सब in-house हमारी head office के अंदर बैठते हैं. तो designing in every aspect will be taken care from us. अभी एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल हमने इंटीरियर डिजाइन किया, उसको अप्लाई आपको करना पड़ेगा. हमने अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पोस्टर्स आपको चाहिए तो डिजाइन हम करके देंगे, प्रिंट आपको करवाने पड़ेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट आपको करवाने पड़ेंगे. बट डिजाइनिंग का पूरा जिम्मा या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंपनी हमारी होती है. नथिंग. ट्रेनिंग के अंदर हम ऑन साइट, ऑफ साइट, ऑनलाइन ट्रेनिंग, एवरी काइंड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग वी डू गिव सपोर्ट. मोस्टली तो ऑनलाइन ट्रेनिंग से काम हो जाता है, बिकॉज लाइक हाउ आई टोल्ड, एवरीथिंग इज मशीन बेस्ड. जो हम आपको मशीन भेजेंगे वही हमारे पास मशीन होती है. तो वीडियो से पूरा का पूरा सेम के सेम मशीन कोई भी सीख सकता है. तो मोस्टली ऑनलाइन ट्रेनिंग से सब हो जाता है. बट लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज से कि इनिशियली हमारे को ऑन साइट ट्रेनिंग चाहिए, तो वी डू गिव ऑन साइट ट्रेनिंग. इफ यू वांट ऑफ साइट ट्रेनिंग, इफ योर साइट इज नॉट रेडी, we do give that option also, but you all have to come to Bombay, where we will give your people accommodation and we will train them on our site, on our running stores, जिसके अंदर प्रेशर ट्रेनिंग से लेके जो हमारी बेस्ट सेलिंग स्टोर्स हैं, हम उनको उधर ट्रेनिंग करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं. Nothing, we take care of complete social media marketing. Now in our kind of a brand, जो टीनेजर बेस्ड ब्रांड है, वो कोई टीवी नहीं ज्यादा देखता है, वो ज्यादा कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता. वो जो भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं तो ऑनलाइन देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं तो ऑनलाइन देखते हैं. तो एवरीथिंग वी डू इज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बेस्ड मार्केटिंग. इसकी हमारे पास पूरी टीम है एंड हम आपके लिए स्पेशल नवा पेज बनाएंगे. ऐसा नहीं है कि हम हमारा ही पेज है उसके अंदर हम आपका नाम डाल के काम करेंगे. हम आपके लिए नवा पेज बना के, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बबल्स आपने कानपुर में खोला था, हम डॉक्टर बबल्स कानपुर का नवा पेज बनाएंगे which will be linked to our page, but you will also be an admin where you can add your friends. कोई comment कर रहा है तो उस पे आप reply कर सकते हैं. You can add new offers which you are giving. So you will be completely connected to us, but we will be supporting and pushing the page from our side. Nothing back-end support. Back-end support मतलब machines खराब हो गई, या for example you want some changes in your shop, for example you want some lights के अंदर नवा change. Everything, we are a one-stop shop जिसके अंदर हमारी ऑफिस के अंदर बैकएंड से लेके, सप्लाई से लेके, रिपेयर से लेके, सर्विस से लेके,
पर्सन का एक अलग टीम मेंबर है which handles everything. For that, as soon as you sign up, we will be sending your mail with our head people. फॉर एग्जाम्पल हमारे सर्विस की कौन एडवाइजर है, हमारे ट्रेनिंग की कौन एडवाइजर है, हर पर्सन का नेम एंड ईमेल आईडी विल बी गिवन टू यू. So you will, we are the one stop shop. You do not need any other person to go to. Nothing. We'll be training you for events. Events is a lovely way. I come on to the another slide, which I have a whole slide on events. Events is a lovely way to earn extra income. There are some outlets which are earning more than the shop in events. So we will be training you for events also. Another thing, we can do pan India marketing. We don't do pan India marketing because we do specialize only where our franchisees are. But there are a lot of people are there कि ये बॉम्बे का ब्रांड है तो ये कोचिन में कैसे मार्केटिंग करेगा. Yeah, now because we do marketing mainly through online, we can do pan India marketing all over India very easily. Nothing, we keep on sharing our new innovations with our franchisees. Every 6 months we come up with a new concept. Like when we come to the product का मैं आपको जब भी brief दूंगा, you will come to know all our products are completely different from what is there in the market. आप literally सोचेंगे कि ये products आज तक हमने देखे कैसे नहीं. So everything we have is completely unique. So every 6 months we come up with a new product, and we never copy from international markets. We come up with a new product, and what we do is in our Bombay stores we launch it. We show sales of about 3 months कि हमको ऐसा sale मिल रहा है, and then we share it with our franchisees, and then we give them an option. इसमें आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ेगा, इतना आपका कॉस्ट होएगा, एंड इतना हमको सेल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन जज दैट आप ये आपके साइड पे भी वो सेल कर सकते हैं. Our USP is, like I told, our machines are localized to us. All our machines are hygienic, stainless steel made. Our Indians are imported, or else they are made and manufactured by us. So everything we do is unique to us. ये आप, for example, I will give you an idea. हमने जब भी फर्स्ट आउटलेट डाला था इंडिया में, उसमें हमको खाली मशीनरी कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट was 30 lakh rupees. Right now the machinery and setup cost is just 3 lakh rupees because everything is localized. आप बोलिए इंडिया में क्या नहीं बनता है, इंडिया के अंदर हर चीज का रिवर्स इंजीनियरिंग कर आप कोई भी मशीन बना सकते हो. बट या फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीन तो बनाई नहीं थी, एक मशीन हम कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाए कि ये मशीन बना के दो. द फर्स्ट ऑर्डर वी हैड टू गिव वाज फॉर 300 machines. So that is why when we entered into the market, we knew we had to franchise like anything, and that is what we plan to do. So in sense, we have a scope of opening 150 outlets in about a year's time. That is our target, and we are moving about 6 to 7 outlets every month. So I really feel now, because COVID is opening up, आगे जाके we should open about 6 to 7 outlets. हमारा जो target है should be maintained to open every month as such. Yeah, so you can see our presence. 2015 में we started about one outlet. 2018 तक we were about 50 outlets, and we've been maintaining that figure. कोई outlet बंद होते हैं, कोई outlet चालू होते हैं. Now you will say कि क्यों इतने outlets बंद हो रहे हैं, क्यों इतने outlets चालू हो रहे हैं? See, you have to understand it's a different product. हर different product is not a very organic product जो एक दिन में hit होएगा. ये एक टाइम हिट हुआ तो आपके नजदीक कोई नहीं आ पाएगा, उसकी गारंटी हम लेंगे. पर हिट करना, मार्केटिंग करना, एवरीथिंग इज अ जॉइंट एफर्ट. यू कैन नॉट से ये पूरा कंपनी का ही काम है, ये पूरा कंपनी ही करेगी. थोड़ा आपको लोकली पुश करना, इट इज रिक्वायर्ड. नाउ क्वेश्चन, हाउ कैन आई गेट माय आरओआई फास्टर? जैसे मैं आपको बताया बेस्ट और वर्स्ट. बेस्ट 3 महीने में निकाला है, वर्स्ट 18 मंथ्स में. तो मुझे 18 मंथ में नहीं निकालना है, मुझे 3 मंथ्स में निकालना है. तो कैसे निकालना है? सबसे पहले तो आपको अपना 100% देना ही है. ये फोफो मॉडल नहीं है, ये फोफो मॉडल है. फोफो मॉडल में हम आपको पूरा बैकएंड सपोर्ट करेंगे. फोफो मींस फ्रैंचाइज ओन्ड एंड फ्रैंचाइज ऑपरेटेड, मतलब आप ही का आउटलेट है और आप ही चलाने वाले. नाम मेरा रहेगा, बैकएंड मेरा रहेगा, सपोर्ट मेरा रहेगा, प्रोडक्ट मेरा रहेगा, सब कुछ हम देंगे, बट चलाना आपको. तो यू हैव टू गिव 100%. मे बी आगे आफ्टर द फर्स्ट 2-3 मंथ्स यू कैन डू अ लिटिल रिमोट कंट्रोल जब भी आउटलेट थोड़ा सेट होने लगे. बट पहले 3-4 महीने तक यू रिक्वायर्ड टू गिव यू 100%. Nothing, everything has to be connected with social media, Facebook, Instagram. So a lot of people are there who still feel social media में कुछ नहीं होता है. But हमारा जो concept है, is a very young and very trending and a very teenager kind based concept. So this is very very connected to the latest things like social media, Instagram. So if you feel you are not connected, maybe the brand is not for you, or maybe you need to put someone who is connected with social media so that they can आज के टाइम आप बच्चों को देखिए फुल टाइम फोन पे लगे हुए रहते हैं. आज तक कभी किसने न्यूज़पेपर देखा हुआ है? तो वी नीड पीपल हु आर सोशल मीडिया कनेक्टेड रादर देन पीपल ओल्ड थिंकर्स जो आज भी ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस करते हैं.
दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट लोग इंटरनेट पे देखे हुए रहेंगे तो ही हमारे पास आएंगे। तो ये वैसा प्रोडक्ट है। आपको अगर ओल्ड प्रोडक्ट चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ मोर कॉन्सेप्ट व्हिच आर देयर इन द मार्केट, बट इफ यू थिंक यू वांट अ न्यू एक्साइटिंग ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज दैट। एंड दिस ट्रेंड को आप आपकी जगह रेप्लिकेट तभी कर सकते हैं व्हेन यू आर connected to social media. Nothing. How do you get ROI faster? You do extra things other than the shop. You do events, birthday parties, kitty parties, corporate events, marriage functions. Money, all money weddings we have participated. All the big top-notch industrialist weddings we do participate, because we are the only people in India doing bubble tea right now. आप खाली bubble tea डालेंगे ना गूगल पे किधर भी तो डॉक्टर बबल्स ही आएगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर बबल्स डालिए तो डॉक्टर बबल्स आएगा। आप खाली किधर भी कोई भी सिटी में हो, आप बबल टी खाली गूगल पे डाल दीजिए। बबल टी इज अ कॉन्सेप्ट, बबल टी इज नॉट आर्स, बबल टी इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। जैसे बिरयानी कॉन्सेप्ट होती है वैसे बबल टी कॉन्सेप्ट है। आप अभी अपने गूगल के ऊपर बबल टी डाल के देखिए, किधर भी हो डॉक्टर बबल्स विल बी द फर्स्ट नेम इट कम्स अप। तो ऑटोमेटिकली वी गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज कि आप हमारे इवेंट्स करेंगे क्या, बर्थडे पार्टीज करेंगे क्या। तो वी डू ट्रांसफर दीज कॉल्स टू आवर फ्रेंचाइजी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे को दिल्ली से कॉल आता है, हमारे दिल्ली के जो फ्रेंचाइज है हम उनको बोलेंगे सर आपको ये लेना है क्या, आपको करना है क्या। आपको करना है तो इट इज अ गुड एडेड इनकम। आप 1 से 2 लाख रुपए की बिलिंग एक दिन की हो जाती है, तो इट इज अ गुड थिंग। फॉर दैट मे बी यू नीड टू कीप 1 or 2 more extra staff, but it really pays off. So if you can do these extra things, it really pays off. Nothing, you have to have amazing guest relations, you have to keep stock control, you have to see that the staff is not cheating, you have to have control over your staff. So that is again very a requirement, and it is a necessity in every business. आप कोई भी business के अंदर देखेंगे आपका staff अगर चोरी कर रहा होगा तो you will never be in the profit. या सो अभी तक तो मैं खाली बबल टी की बातें कर रहा था। तो बबल टी से ज्यादा वी हैव बबल वॉफल्स, वी हैव आवर स्क्वायर वॉफल्स। वी डोंट डू बेल्जियन वॉफल्स। अगेन यू विल से कि बेल्जियन वॉफल्स सभी करते हैं, तो आपके पास भी वॉफल्स हो, क्या अलग है? हमारा मशीन अलग है, हमारा प्रीमिक्स अलग है, हमारा प्रोडक्ट ही कंप्लीटली अलग है। इवन पैनकेक्स आप देखेंगे, वी डू मिनी पैनकेक्स, वी डोंट डू बिग पैनकेक्स लाइक ऑल द अदर ब्रांड्स। ये मिनी पैनकेक में फायदा क्या होता है? इट्स वेरी इजी टू हैव। आप खाली एक you can just put your fork and just have it in one single bite. So it's more toppings and less dough, which Indian people like the best as well. Okay. What is our USP in our bubble tea? The bubble teas में भी बहुत सारी चीजें हैं. All our ingredients are naturally sourced. I know India में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, but yes, in most of the cities now, people who are the younger generation, they are thinking about all of this कि naturally sourced है कि नहीं है, इसमें chemical based है कि नहीं है. They do think about all of this, and people avoid fizzy Coca-Cola drinks आज avoid करते हैं, and they are going towards juices a lot. So everything we have natural and organic. Nothing. The tapioca also we import from Korea and Taiwan. हम वो इंडिया में नहीं बनाते because वो टेस्ट जो है इंडिया के अंदर हम replicate नहीं कर सकते. Nothing. All the fruit flavors are, everything is naturally sourced. कोई भी ऐसी हम chemical चीजें use नहीं करते. And we have made it to suit Indian buds. Like for example, आप imported mango drinks पीजिए और आप Indian mango drinks पीजिए, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है. So for example, if you got that imported mango taste over here, Indian people would not have liked it. That's why we have made sure that Indian people के हिसाब से हम Indian taste रखें. Now I'll show you in our drinks also what do we have. In the center we have the bubble tea, the taro bubble tea with tapioca pearls, with black tapioca pearls. मैंने आपको बताया. Left में we have a mango iced tea with passion fruit bubbles. ये bubbles जो है हमारे main selling point है. ये I'll come up to in the later slides also. Then we have an iced coffee. All these iced teas and iced coffee again is a very different proposition. We are not serving anything what is there in the market. We stop with blueberry jellies. There on the right we have our milkshake, which is a mango milkshake again with passion fruit bubbles. On the left we have a kiwi milkshake with kiwi jellies. Sorry, kiwi lassi. So we have lassis also. हमने क्या किया? Because lot of Indian market ले आप North India बोलो, South India बोलो, lassis में आपको कितने flavor मिलेंगे? आपको 2 या 3 flavor मिलेंगे. We have 20 flavors of lassis in which we add jellies and we made it we've made. ऐसा नहीं है कि हमने एकदम ही नवी चीज बना दी. मिल्कशेक से, मिल्कशेक का टेस्ट तो सबको पसंद है, उसके अंदर हम जेलीज या बबल्स डाल के दे, तो वी आर ट्विस्टिंग इट, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ होल न्यू प्रोडक्ट. ये लस्सी तो सबको मालूम है, तो लस्सी को हम फ्लेवर नवा दे रहे हैं, टेक्सचर नवा दे रहे हैं, एंड उसमें हम वी आर एडिंग टॉपिंग्स, तो उसका एक अलग ही फील आ जाता है. बट यू आर हैविंग अ लस्सी. आप फॉर एग्जाम्पल पिज्जा खा रहे हो पर अलग टाइप का पिज्जा खा रहे हो, रादर देन द सेम मार्गरीटा पिज्जा जो आप सब जगह खाते हो. तो दैट इज व्हाट वी डन. इतना हमने रिकग्निशन रखा है कि पीपल अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोडक्ट इज, रादर देन ये क्या नवी चीज आ गई हमको अभी ट्राई नहीं करना है.
Again, this is our menu. We have iced teas, we have milkshakes, we have the full hot coffee line. Again, a hot coffee is made with a proper barista machine. It's not made in that button daba ke, kind of जो product निकलता है. Bubble waffle, this is our most trending product right now, the bubble waffle. अभी size देखेंगे, जो glass है ना, वो 500 ml का glass है, तो भी waffle जो है आधा उसके बाहर है. waffle के अंदर आइसक्रीम से लेके चॉकलेट से लेके वेफर से लेके सब आता है. ये एक waffle मिनिमम 2 से 3 लोगों के बीच में खत्म होता है. बट बेस्ट चीज है जब ये कस्टमर के सामने आता है, इसका विजुअल इम्पैक्ट इज सो बिग दैट लिटरली पीपल टेक फोटोग्राफ्स एंड पुट इट ओवर सोशल मीडिया. Nothing iced coffees, yogurt shake, जो हमारी लस्सी है, square waffle and the hot chai menu. Now you will say कि आपके यहाँ इसमें सभी ठंडे प्रोडक्ट्स हैं, तो we have the full hot menu also for the colder regions. लाइक आप जम्मू बोल दो, दिल्ली बोल दो, जब ठंड पड़ती है, जब बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, तो you can pair our waffles with the hot drinks as such. Again, these are our new additions. It's mocha hot tea cappuccino, Taiwanese taro cappuccino, then the Japanese matcha cappuccino, Hong Kong cappuccino. So these things we are going on, adding new products to the menu all the time. Again, this is a very extensive menu. Like I said, every concept we have 20 different flavors. I'm not going to read the menu, but I will show you the variants we have. We have something very localized like Kala Khatta flavor, and we have something very exotic like passion fruit or mint mojito also. So we have considered every kind of a person in the our taste palette of India. So again, like for milkshakes, maybe आप देखेंगे, we have मीठा कलकत्ता पान, and एक side पे we have bubble gum and we have Ferrero Rocher जो hazelnut flavor होता है. So we have very good variants. ऐसा नहीं कि हर इंसान के लिए कुछ न कुछ हमारे पास है. Now we start with our bubble tea. Our bubble tea is also, if you go to say, हमने जब concept लेके आया black tea जो इंडिया के अंदर है, भी आपने देखा लिप्टन आइस टी इंडिया में क्यों फेल हो गई? Because it was black tea, and black tea in India is a very mature product. And ये जो product है black tea जो है, a lot of people say कि नहीं हमारे को नहीं चाहिए, but green tea आप देखेंगे तो green tea आज बच्चों में बच्चा, हर लेडीज इंडिया के अंदर, हर टीनेजर लड़की, हर बॉडी बिल्डर, सब लोग ग्रीन टी पीते हैं. तो वी स्टार्टेड ब्रूइंग आवर बबल टीज विद ग्रीन टी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट इंस्टेंटली एक्सेप्टेड इन आवर टारगेट ऑडियंस. जो हमारा टारगेट ऑडियंस 20 to 15 to 30 का था, उसी में इंस्टेंट एक्सेप्ट हो गया. ना इसमें फायदे तो फायदे ही है. इट इज ऑल नेचुरल, इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इट बिकम द परफेक्ट हेल्दी रिफ्रेशमेंट. एंड उसके अंदर आप अपने फिर चॉइसेस डाल दीजिए ऑफ टॉपिंग्स, तो इट बिकम द वेरी फन काइंड ऑफ अ ड्रिंक. इट इज नॉट बोरिंग ग्रीन टी जो आप रेगुलर ग्रीन टी, एल्डर फ्लावर ग्रीन टी आप पी रहे हो रेगुलर, वैसी नहीं है. इट इज अ फन रिफ्रेशमेंट जिसके अंदर आप बबल्स और जेलीज और सब भी डाल सकते हैं, एंड उसके साथ में इट इज हेल्दी. नथिंग ग्रीन आवर बबल कॉफी. We tried brewing our iced coffees with black coffee. Black coffee इतनी strong चीज, इतनी bitter चीज होती है कि उसमें आप कितना भी कोई भी फ्लेवर डाल दीजिए, वो फ्लेवर कभी भी उसको टच नहीं हो पाएगा. So we started brewing coffee, and we are the first people in India, and we are the first people in the whole world. Because of this product, we got 4 to 5 awards. We started brewing coffee with green coffee. Green coffee is non-roasted beans. How do we do that? If we take non-roasted green beans and we freeze dry them and make powder over them, and then we brew. This technology is totally made by us. We've not patented it, but yeah, it is totally made by us, and it's not being used right now by anyone. तो इसमें फायदा क्या हो जाता है? इट इज 0% कैफीन. लाइक कॉफी के अंदर उसको जो रोस्ट करने से उसमें कड़वास और उसमें कैफीन आता है, बट बिकॉज वी नॉट रोस्टिंग इट, इट इज 0% bitter and it has 0% caffeine, so it can be had by your 2-year-old child also. A coffee which can be had by a 2-year-old child. Now, because this is a young based drink, we want it to be a coffee for all ages. Again, it has the full taste of coffee, full smell of coffee, but it is 0% bitter and 0% caffeine. So इसमें फायदा वही है. It be a fun, flavorful coffee with the added benefits of bubbles and jellies and tapioca, which you can have without the bitterness as such. Moving on to the next slide. Yeah, our shakes. Again, our shakes, we have non-dairy shakes. This is the same way McDonald's, Burger King, any of the top brands make their shakes. They don't use ice cream, they use powder-based or cream-based shakes which are non-dairy. इसमें फायदे बहुत हैं. First of all, the biggest फायदा as an investor is cheap to make. Another thing is low on calories, allergy-free, is lactose-free, and it is a plant-based thing. But it tastes exactly like a thick ice cream shake. आप कोई भी बोल सकते हैं McDonald's के अंदर कोई आइस क्रीम नहीं डालता है. McDonald's के कोई भी शेक में आइस क्रीम नहीं डालता, खाली powder-based non-dairy premixes होता है. And it turns out to be rich, creamy, and thick. So that is the same thing we are using. Again,
उसके अंदर we can add what McDonald's and other brands are not doing is the bubbles, jellies, tapioca, chocolate chips जो हम डाल सकते हैं कोई भी नहीं डाल सकते. Again, all of this is taken by our proprietary straw. We are the only people who make 12 straws in India जो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बनते हैं. 12 का जाड़ी स्ट्रॉ हम सप्लाई करते हैं. You won't get these straws anywhere. The max straw you can get is 10 straws anywhere in India. Nothing. Our lassi is not made by the regular dahi. It's again made by a powdered probiotic base. Like probiotic is good for the stomach. Again, all of this ये health जो मैं बोल रहा हूँ, that is all secondary. First is all taste. It tastes exactly like your गली का डेयरी का जो thick लस्सी रहती है वैसे ही टेस्ट करेगी जिसके हम फ्लेवर्स और बबल्स और जेलीज हम डालते हैं. Again, our bubble waffles, like you say, why it is a bubble waffle? Because में आप देखेंगे it has a lot of bubble shapes onto it. That's why we named it bubble waffles. में फायदा क्या है? It is a texture which is the thin part is crispy and the bubbles which are then nice and soft. So it is a combination of a cake and a crispy cone both at one time. It is freshly baked in our machines from our premixes, and then it is served in various flavors. Like we have Belgian waffle, then we have Belgian chocolate waffle. This is the red velvet waffle. We add ice creams, chocolate sauce, cornflakes. We make it a crispy, crunchy, chocolatey kind of a thick bubble waffle, which literally when it goes on the table is called like a freak sundae. Freak means literally something which is out of the world. Automatically लोग उसका सबसे पहले ही फोटो निकाल के फेसबुक पे डाल देते हैं. Again, our American waffles, everyone has Belgian waffle. It's not something we just changed our name and we put it. It is American waffle because American waffles are single waffle. They're thick rather than thin. So they're crispy on the outside, really soft on the inside. So it has the texture again of a crispy cone plus a soft cake. It's a combination of a brownie, cake, and a waffle all together. Again, it's pre-cut, so it is not messy. You can literally take a fork and take one piece and directly have it. So again, if you like this concept, like for example, if you like Belgian waffle, there are 15 other outlets which are doing that, 15 other brands which are doing it. If you like American waffle, which you like from our place, there is no other brand in India who is doing it this time. You have to come only to us. Waffle nachos, like you must have heard, nachos are cheesy chips which you dip into cheese sauce or avocado sauce. We take that same concept and we made it into dessert. So our nacho chips again are made in the outlet right in front of the customer, made by the waffle batter. So they're sweet nacho chips which we add with chocolate sauce and white cream sauce, and then we put ice cream in the center, so you can take it, dip it into the ice cream and have it. So it becomes like an ice cream you can share with 10 people. Like for example, if you had 100 rupees ice cream, could you share it with 10 people? No, because it would be unhygienic. But in this way, it becomes a very social kind of thing. And this thing cost only 100 rupees. So 100 rupees, you would have something which every person in your group could have and could taste together. Even our pancakes, normally you have इतने ही आटे में एक pancake बनता है. हम 9 pancake बना के देते हैं. In now pancake क्यों? Because it becomes a social thing. Everyone can have their own pancake. You don't need to share it with other people. Again, this is made in our machine with our batter and with our premixes. So you don't have to anything. Even the sauces are completely packed and given to you. ऐसा नहीं है कि you have to make these sauces in any kind of way. You just have to, जो हमारी 3-step procedure जो रहता है, you have to follow that and you have to serve it to the customer. That's it. Again, hot chai and hot coffee, like I said, there are some cities which have a very cold weather in some months of the year, and you would say the cold drinks aren't really moving, so we combine it with the hot chai. Again, our hot chai are more like cappuccino. Like you see at tea, it is so much froth on top. We use a proper frother to make our tea. So the texture becomes more like a cappuccino rather than a tea. We froth it to give it a really very, very airy and a very light feel to the chai. So our chais are also different. ऐसा नहीं कि it will be the regular chai if you get a chayos or your regular chai wala. The texture of the tea will be very different. So if you like your masala chai to be frothy, we will be the best place to give. Like the hot coffee menu, we just don't have cappuccino and mocha cappuccino. We have the full coffee range. We not just put it on the slide. We'll be sending you all the details by mail. So again, I will tell you, please put your mail ID. Please message us your mail IDs. We won't be badgering you on phone calls. We will be sending a mail, and if you send us a return mail, yes, we will be calling you up for further clarifications of questions and answers. Again, this is one of our new products which we just launched in about 4 to 5 stores of ours. The base is made of potato.
the waffle ka base. So it's a savory waffle. In India, no one is doing savory waffles. Everyone is doing dessert waffles. So this is a combination of a pizza, French fries, and a waffle, which is served to the customer. And this is right now the most moving product in our outlet, जिसमें भी डाला हुआ है. Yeah, and we are going to propose this new concept in the 1-2 months to all our franchisees. So this is the way we do. We launch new products and then उसके 2-3 महीने हम sales देखते हैं and then we pitch to all our franchisees कि कैसे आपको डालना है कि आपको नहीं डालना है. Again, ice cream burger, again a new product which we are trying at about 3-4 of our outlets. It's a regular tutti frutti bun with the same infrastructure. We're using the same ice cream, the same sauces, but it's a completely different product. Now we'll talk about our toppings. Our toppings are the main USP of our brand. You know, milkshake तो सभी जगह मिलते हैं. Maybe हमारे milkshake थोड़े अलग है, पर milkshake तो सभी जगह मिलते हैं. What makes our drink, you know, different and unique is our toppings. We are not giving the regular toppings also जो बॉम्बे में या इंडिया में मिलते हैं, like you know the vermicelli or something like that. Our toppings are completely different. So we start with the freshly made tapioca. So it's made from the cassava plant. It is completely natural. इंडिया के अंदर सेम चीज साबूदाना बोला जाता है, but it's in white color. What we import is black color. We could have done the white ones also, but then उसका वो साबूदाना का recollection आ जाता है, and we wanted to keep it as authentic as possible. This is the only thing we have to cook every day. Everything else is packaged. This is the only thing we have to cook every day and keep fresh for the customers to have. Chocolate chips, again, chocolate chips also we have dark chocolate chips, milk chocolate chips, and white chocolate chips. इसमें you know a lot of people in India have a very heavy sweet tooth, जिनको मीठा को ज़्यादा ही पसंद है. Rather than having the tapioca, it's the same size of the tapioca, and tapioca is completely bland. I personally love tapioca, but बहुत लोगों को मीठा पसंद है, तो उनके लिए हमने ये रखा हुआ है. Nothing of fruit jellies. Again, jellies in India all are made from gelatin. We are the only people in India to make jellies with a coconut base. Everything is made from coconut extracts. But everything tastes exactly like the name we have given. For example, mango jelly होगी, it will taste exactly like mango. इसमें फायदे क्या है? It is light and it is easily dissolvable in your mouth. It does not feel sticky and heavy in your mouth. So it is a very different texture. Another thing, it is guaranteed vegetarian. Like you know, why do you say jelly? Jelly नाम कैसे पड़ा? Jelly के अंदर मतलब gelatin use किया जाता है. Gelatin 90% is made from non-veg sources. नॉन वेज सोर्सेज से ही जेलेटिन बनता है. वेज जेलेटिन भी अभी चालू हुआ है, बट देयर इज नो गारंटी कि ये वेज है कि नॉन वेज है. तो जेलेटिन इसलिए हम यूज ही नहीं करते हैं. वी मेड इट फ्रॉम कोकोनट. अगेन इट कैन बी एडेड टू एनी एंड एवरी ड्रिंक ऑफ योर चॉइस. इट कैन बी इन एडेड टू द डेजर्ट्स ऑफ योर चॉइस. नाउ द मेन सेलिंग थिंग्स which right now sells the most, जो हमारे सबसे ज्यादा are these popping bubbles. What are the popping bubbles? They are not soda bubbles. Everything bubble tea मतलब ये जो bubbles है सोडा bubbles है नहीं, ये सिरप फिल्ड बबल्स है. इसमें फॉर एग्जांपल आपने वेनिला शेक लिया है एंड इसमें आपने कीवी बबल डाला है, स्ट्रॉबेरी बबल डाला है एंड आपने मैंगो बबल डाला. आपको वेनिला के साथ में अगर आपको कीवी का बबल आया तो यू गेट अ बर्स्ट ऑफ कीवी एंड लिटरली आपके माउथ में बर्स्ट होएगा एंड वो गायब हो जाएगा. एवरी टाइम यू गेट अ बर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने 2-3 फ्लेवर रखे तो यू गेट द फ्लेवर्स डिफरेंटली. ऐसा नहीं है आपने अगर मैंगो के अंदर आपने वेनिला शेक के अंदर मैंगो डाल दिया, स्ट्रॉबेरी डाल दिया, वो बन जाएगा फ्रूट पंच. ऐसा नहीं, आपको वेनिला भी टेस्ट आएगा अलग से, आपको स्ट्रॉबेरी का टेस्ट जब भी वो बर्स्ट होगा वो अलग से आएगा, आपको मैंगो का टेस्ट जब भी बर्स्ट होगा वो अलग से आएगा. Everything, so this bursting of flavors is completely unique to our brand. There's no other brand right now in India giving this concept. Might be the आगे जाके आ जाए, but no one, we can guarantee no one can touch our our costing because we import this on our own. आप थर्ड पार्टी से लेंगे, फोर्थ पार्टी से लेंगे तो ऑटोमेटिकली उन लोग को भी खर्चे लगते ही जाते हैं. बट बिकॉज दिस वी आर इम्पोर्टिंग एंड फॉर अ सिंगल आउटलेट इट इज नॉट फिजिबल टू इम्पोर्ट. वो 1 कंटेनर 2 कंटेनर थोड़ी शिपिंग के मंगा सकते हैं. हम एवरी मंथ एक कंटेनर मंगाते हैं, तो वो हमारे लिए फिजिबल है, बट वो एक सिंगल आउटलेट के लिए कभी फिजिबल होगा नहीं. तो दैट्स व्हाई वी फील आवर कंपटीशन विल नेवर बी एबल टू गेट द कॉस्टिंग वी हैव. नाउ कमिंग टू आवर स्टोर्स, like I told, we are very lab theme based. So this is and we do not concentrate more on sitting, we concentrate more on takeaway because our concept is a very 2 to 3 minute of concept. Takeaway concept hai. So you also want the customer to take the drink and leave rather than take the drink and sit over there. So, like if you see in the shop where we have the bike,
we could have put some sitting over there. Rather than that, we put a photo area where people take photographs and put it online, which, literally makes more publicity for her rather than, waste of space as such. This one of the stores in Surat. Now, if you see on the left, the uniform of the girl is like a t-shirt, but the t-shirt is like a lab coat. जो doctors का coat होता है, जो stethoscope है. So it's a very funky kind of a thing, but it does remind you of a lab, or it does remind you of an experiment as such. Social media reviews, I know it's not really visible over here, but I would invite you all to go to our pages and check out our reviews. Most of them are perfect ratings. So yeah, this is the end of the presentation. Yes, I will be giving a little bit hint of what the financial implications are, what is the investment required, and what is basically the profit margin and everything. So yeah, my number is there on the lower part. So please feel free to call me after the presentation or whenever you all want. You have any questions, as such. So yeah, we'll start with the investment. So yeah, we're looking at about 15 to 16 lakh rupees worth of investment into one total investment in one single store. Iska breakup kya hoega? Iska breakup is, now whatever I'm giving is mota big figures. For that, or if you want detailed things, please put your email ID. I'll be sending you a detailed financial model, Excel sheet of everything I will be sending you. जिसके अंदर you will be totally satisfied with every question. जिसमें sales से लेके खर्चा से लेके split से लेके everything will be there. Sales also of in shop events, delivery का कितना sales हो गया, everything will be specified in that. Yeah, so 15 to 16 lakh rupees, उसमें 5 lakhs would be a franchise fee. So yeah, franchise fee is included in the 15 to 16 lakhs. About 4 to 5 lakhs would be your cost into your interiors of the place. Interiors के अंदर आपका सब आ गया, फ्लोरिंग से लेके AC से लेके इलेक्ट्रिकल से लेके सामने साइनेज बोर्ड से लेके कारपेंटरी से लेके everything. So if your place has most of it, automatically वो खर्चा कम होते जाएगा. Another thing is 2 to 3 lakh rupees of opening stock figure. So initial माल होता है. Now this is something that people do not catch into investment. People catch this into rolling cost. So we've not caught that. We caught that into the investment only. So 2 to 3 lakh rupees worth of opening stock figure. This is normally more than enough for 1 to 2 months. कोई लोग को ज्यादा भी चलता है, कोई लोग को कम भी चलता है, depending on your sales. And 2 to 3 lakh rupees worth of machineries we will do. Again, machineries, जो मशीनरी हम बनाते हैं, we will be implying that you buy it from us. But जो मशीन हम मार्केट से लेते हैं, we will be giving you all details. So if you think you are getting it cheaper in your market, we do not want the profit margin on that. We will be giving you all the details of brand, the specifications of it, so you can buy it on your own also. It is good for us because then you can take local service rather than relying on us for service of those machinery. So yeah, 15 to 16 lakh is what we are seeing. Now we'll talk about sales. Like I told, we have outlets doing 12 to 13 lakh rupees also, and we have outlets doing 3 to 4 lakh rupees. So it totally depends on the location. Totally depends. Now ऐसा नहीं है कि मुंबई है तो अच्छा सेल होगा. आज जो हमारा best outlet है is in Gujarat. It's in a tier 2 city, not even a tier 1 city. So it totally depends on what kind of marketing you do, how confident you are to sell this product, and what is your range of people in which you can advertise. Nothing. What and the worst sales क्यों हो रहा है? Because वो सिटी में ऐसा नहीं कि सिटी में दम नहीं था, but franchise is totally more than happy. अभी 3 लाख रुपए में भी उसको 1-1.5 लाख रुपए बच रहा है without doing anything, and he does not really want to push more. He's more than happy with that. He's saying मेरा 1-1.5 साल में पैसा निकल जाएगा, मुझे बस है. So people are more than happy with that also. So it totally depends on how much effort you are putting into sell the product to get more sales. So sales should be between 3 to 18, 12 lakh rupees. Now we talk about the royalty. Yeah, we do charge a royalty per month basis. Royalty is something which we use for our back-end services. जो हम जिसका पैसा कोई नहीं दें. People ask royalty क्यों होती है? अभी I know brands which are charging 10%, 12% royalty also. But yeah, because we buy everything, we have to store everything, we have to warehouse everything, and no one gives us that cost. We do charge that to every franchise. Is 6% of their sales. We charge them every month on, and the non-taxed amount, not the taxed amount. Like for example, if your sales is 5 lakhs plus taxes, so we will be charging you 6% only on the 5 lakhs, not on the taxable amount. That is the royalty we are looking at. So yeah, so this is the basic end of the presentation. Ashok, if you want, we can start the question and answer round.
Yeah, so guys, if you're ready with your questions, please shoot. And we